Okay, guys, welcome back. And this is the first chapter. So I'm calling this chapter Introduction. And this is a brief level of introduction of Java I'll give. Not going to talk into very much detail about it here. But from next videos and as we progress, हम और डिटेल में इस चीज़ों को समझेंगे. ठीक है, so let's talk about Java. So basically Java is a high level object oriented programming language. High level का मतलब है कि basically आप जब constructs लिखते हो तो basically should be easy for humans to read, write and understand. So that is called generally a high level programming language like Python या फिर C++ कोई programming language देखी होगी. तो जनरली उसमें कंस्ट्रक्ट्स काफ़ी इजी होते हैं और जब एज ए ह्यूमन एज अ कोडर जब समझने लगते हैं तो हमें आसान लगता है वो. ठीक है, Java is again a very popular programming language and we can build robust, secure and scalable applications with Java. Okay, so that is about that. Let's talk about key features. So एक है platform independence. I'll talk about this in more detail in the next video probably. About the JVM, the Java Virtual Machine. जिसका मतलब है कि आप जब एक Java का कोई प्रोग्राम लिखते हो तो you can basically run everywhere using the JVM, right? जो आपका कोड होता है that code is actually compiled to bytecode. ठीक है, एंड दैट bytecode कैन बी रन बाय एनी JVM. जो भी दूसरे मशीन में भी हो, किसी और मशीन में भी हो, वहाँ पे भी रन कर सकते हैं. इसके बारे में बात करेंगे और अच्छे से, तो अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है. अगेन इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो बेसिकली काफ़ी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स और जावा इज़ वन ऑफ दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे क्लासेस और ये सब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, राइट. एंड इट्स वन ऑफ द की फीचर ऑफ जावा. विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो इन मोर डिटेल लेटर. Robust and very secure. So basically you have features like exception handling, automatic garbage collection and security features as well. Then multi-threaded, तो basically concurrency और ये सब Java में already है, right? Rich API का मतलब है कि basically और क्या क्या support मिलता है, कौन से libraries हमारे पास Java में है, which is around UI, user interface भी आप बना सकते हो, desktop application बना सकते हो Java में. Networking, collections like various जो आपने देखा होगा array list, then what else you have hash map and all those things, like they are part of the collections also, etc. And let's talk about the applications of Java. तो applications की अगर बात करें तो Spring बहुत ही बड़ा framework है and a lot of MNCs and multiple companies are using it, right, to write their backend or maybe using microservices and everything. Then Android, right, मोबाइल डेवलपमेंट की बात करें तो Android में बहुत ज़्यादा जावा यूज़ होता है और एटलीस्ट होता था पहले और अभी भी होता है काफ़ी. Then talking about the enterprise application, many enterprise applications इनका बैकएंड ना जावा में लिखा हुआ है. So example, if you talk about Hotstar, right, तो Hotstar का शायद देखा था अपन ने देखा है कि they use Java a lot. Similarly, other companies like Netflix and many other companies use Java in some form at least, right? Then also in big data, so Hadoop is one of those places where Java is extensively used again, and so many others, right? Let's talk about popularity and market trends. So basically क्या चल रहा है, right, Java में. तो Java में actually अभी भी काफ़ी jobs हैं. There are a lot of jobs. मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि AI तो रिप्लेस कर ही देगा सबको, तो ऐसा नहीं है अभी तो एटलीस्ट, क्योंकि आप अभी भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस और बैक एंड वर्क जो है वो AI हैज़ नॉट कम्प्लीटली बीन एबल टू अंडरस्टैंड. तो यू कैन स्टिल इफ यू आर रियली गुड एट प्रोग्रामिंग, इफ यू रियली हैव लर्न अबाउट द डिजाइन पैटर्न्स एंड एवरीथिंग एंड हाउ द बैक एंड स्टफ फॉर द स्प्रिंग और विथ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस वर्क टुगेदर, you can still see that ki Java still have a lot of to offer in the world, right? So let me copy this link actually and show you. So this is the TOB index that is very popular in programming languages. So let's open this. Okay, so yeah, so actually it opened. So basically it's an index where it talks about like हर month basically बताता रहता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी क्या सबसे पॉपुलर है. आप मतलब इसका यूज़ करके ऐसे ये भी देख सकते हो कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी सबसे पॉपुलर चल रही है, किसमें जो कौन सा मतलब किसको सीखने से मुझे ज़्यादा जॉब्स मिलने के चांसेस हैं, सो एंड सो होता, राइट. सो इफ यू सी हियर, सो Jan 2025 यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि जावा जो अपना है वो 3rd पे आ गया. ठीक है, पहले ये 4th पे था इन द लास्ट Jan 2025, अभी 3rd पे. Then Python and C++, right? So these three programming languages. So why I'm not teaching Python or C++ is actually very irrelevant. मतलब इन top 3 में से आप कोई भी या top 10 या जो भी मतलब लाइक इट्स अबाउट कि एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से सीखना और एक उसके बाद उसके कंस्ट्रक्ट्स को समझना, उसके बाद आपको एक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी ईजी होने लगती है. लेकिन कंपेयर C++ इज अ डिफरेंट बीस्ट टू टैकल. Python is very easy to learn.
जावा इज वन ऑफ दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जहाँ पे आपके जो डिजाइन पैटर्न्स और ये जो oops का कॉन्सेप्ट जो है ना काफी इंग्रेव्ड है उसमें, राइट? तो इफ यू डोंट नो, इफ यू डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, which you talk about later, but if you don't think in terms of objects, then मतलब आप बहुत ही जावा को उतनी अच्छे से समझे नहीं हो, राइट? तो these are the few things that I want to talk about, and you're in good hands if you are good zone. अगर आप जावा को अभी सीख रहे हो और अब जल्दी से इसको कोशिश भी करेंगे कि we'll try to complete this course in maybe 2 months mostly. That is my plan actually, right? So good market friends, there are a lot of jobs. Like मेरे को ये देखा था तो मैंने बहुत बार मेरे को लिंक्डइन पे आता रहता है, ऐसे HR वेचआर से कनेक्ट आते रहते हैं कि भाई वी आर लुकिंग फॉर हायरिंग अ सीनियर जावा बैकएंड इंजीनियर एंड सो एंड सो फोर्थ, तो क्या आप इंटरेस्टेड होगे? सो देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स इन फॉर जावा एज वेल राइट नाउ. So this is about popular marketers, but why I'm teaching Java, right? So it's actually थोड़ा controversial statement, but you can think about it like that. It's not about Java actually, right? For you, it means that knowing one programming language in depth and be a master of it, right? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एकदम मास्टर बन जाओ बढ़िया से, ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एंड इट विल बी फॉर ईजी फॉर यू टू क्रैक, बिकॉज देन होगा क्या कि जावा जो काफ़ी तो मैंने जैसे बताया ना, बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी जावा का में बैकएंड लिखा हुआ ही होगा. तो आई थिंक यू कैन से कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको नहीं पता. अगर आपको पता है तो देन इफ यू आर लर्निंग जावा देन यू आर इन गुड डायरेक्शन. So that is all from me on this video. अब next videos हम सीधा कोड और ये सब चीज़ों पे घुसेंगे. Not going to talk about much theory anymore. So thank you guys and I'll see you in the next video. Bye.